So here is our next discussion about some important MCQs of biological molecules. Primarily, the syllabus is FTC based, but it includes some of the questions from other sources as well. So let's move to the question number one. Includes that most abundant biological molecules in prokaryotes. प्रोकैरियोट्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला या यूकैरियोट्स में भी सबसे ज्यादा पाए जाने वाला बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बेसिकली प्रोटीन्स होंगे. सो राइट ऑप्शन इसमें डेल्टा. बट अगर गिवन ऑप्शन इसमें वाटर के हवाले से भी हो तो हम जानते हैं कि मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो वाटर होगा. प्रोटीन से भी कहीं ज्यादा परसेंटेज में वाटर एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये मिलता है. और ऑब्वियसली एक पोलर कंपोनेंट है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मास में सबसे ज्यादा वाटर मिलेगा. नंबर थ्री, study of metabolism and structure of biological molecules is the main area of biochemistry. जबकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप लोग डीएनए के फंक्शंस डिस्कस कर रहे होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज, और हिस्टोलॉजी इज ऑल अबाउट टिश्यूज. नंबर फोर, an upward change is endothermic in living cells and termed as anabolism. Alpha is the right option here. Number five, a biochemist is analyzing sulfur in living cells. A most stable target molecule will be. Obviously हमें पता है sulfur is commonly found in proteins, so right option होगी यहाँ पे beta. Number six, dash sugars and dash amino acids are naturally common in living organisms. शुगर्स जो नेचुरली पाई जाती हैं ज्यादातर वो डेक्स्ट्रल फॉर्म की हैं, राइट हैंडेड शुगर्स, जबकि अमाइनो एसिड लिबो फॉर्म में है, जैसा कि जिसे हम कहते हैं लिबो अमाइनो एसिड्स और लेफ्ट हैंडेड अमाइनो एसिड्स. तो अल्फा बेस्ट ऑप्शन इसमें होगा. नंबर सेवन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग among water molecules will be maximum in the solid form, क्योंकि मैक्सिमम आइस क्रिस्टल्स के अंदर हमें हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं जो मैक्सिमम एरिया और relatively less density cover करते हैं as compared to liquid form. Thermostability in living organism is primarily due to heat capacity of the water, जबकि cooling effect जो होता है that is caused by heat of vaporization. और thermostability means sudden thermal changes को जो अवॉइड करने का काम करेगा वो हीट कैपेसिटी की क्वालिटी होगी वाटर के हवाले से. Which of the following role is contributed due to insolubility of organic and non-polar molecules in water? तो हम जानते हैं ऑर्गेनिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. नंबर 10, nitrogen is rare in carbohydrates but can be found in some of the carbohydrates, for example chitin में जो है वो नाइट्रोजन मिल जाती है. नंबर 11, which of the following are readily oxidized and are powerful reducing agents? They are aldehyde form of carbohydrates which are powerful reducing agents, and they are readily oxidized by donating their hydrogen. One of the following is not the natural producer of carbohydrates. Carbohydrates जाहिर है सिर्फ producers algae, plants, cyanobacteria या कुछ bacteria produce कर रहे होते हैं. But fungi they are heterotroph or consumers already. So it's Charlie. Number 13. Which one is the essential constituent of common coenzymes? ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं लाइक एफएडी एनएडी, तो ऑब्वियसली उसमें पेंटोजेस राइबोस मोर कॉमनली जो मिल जाएंगे लाइक एफएडी और एनएडी एनएडी. राइट ऑप्शन इसमें होगी अल्फा. नंबर 14, which of the following is a ketopentose? राइबोस एल्डोपेंटोज है, फ्रुक्टोज कीटोहेक्सोज, डीऑक्सीराइबोज भी एल्डोपेंटोज. बट कीटोपेंटोज इज राइबोलोज, जो आपको पता है कि सबस्ट्रेट है डार्क रिएक्शंस में कॉमन प्राइमरी सबस्ट्रेट. When glucose form a glucopyranose, carbon number 1 joins to the carbon number 5 the glucose to form ring structure. So
राइट ऑप्शन है बीटा. नंबर 16, मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड and most common respiratory substrate. It's basically glucose. So right option है डेल्टा. बाकी के इसमें ग्लूकोज के ही स्टीरियोआइसोमर्स हैं. नंबर 17, व्हाट इज द थियोरेटिकल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज. इसके लिए हम एक फार्मूला यूज कर रहे होते हैं 2 की पावर n. इसमें n है हमारे पास नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स एंड वी नो ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन्स मौजूद होंगी. दैट्स व्हाई इसमें राइट ऑप्शन है अल्फा. 2 की पावर 4 16 के इक्वल होगा. Which one is not a reducing sugar? We know sucrose. तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन या एनोमेरिक कार्बन है ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1, फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 2, they are busy in forming glycosidic bond already. That's why it behaves as non-reducing agent. Number 19, conversion of starch and glycogen into maltose depends upon the activity of amylase. जो डाइजेस्टिव एंजाइम भी है, डाइजेशन के दौरान भी यूज हो रहा होता है. Number 20, common structural feature found in all carbohydrates. हम जानते हैं carbohydrates, they may be keto or they may be aldehyde forms, but hydroxyl group is found in all carbohydrates, जबकि carboxyl group इनमें characteristic feature ही नहीं है. So alpha hydroxyl group किसी भी carbohydrate में जो देखा जा सकता है. Number 21, excess of the following sugar causes serious disturbances in diarrhea patients. लीवर शुगर्स अगर जो कि आइसक्रीम वगैरह में यूज हो रही होती हैं या बेकिंग वगैरह में भी यूजुअली अवेलेबल नहीं होती, बट अगर ये ज़्यादा यूज हो तो डायरिया पेशेंट्स में स्वेयर डिस्टर्बेंसेस कॉज करेंगी. नंबर 22, मोस्ट कॉमन लिंकेजेस which are found in disaccharides are found between carbon number 1 and carbon number 4. So alpha seems the best option, जैसा कि माल्टोज में भी और लैक्टोज में भी लिंकेज मिलता है. नंबर 23, find out the formula of a hexasaccharide having hexoses only. You can simply multiply glucose with 5 and then अगर ये हेक्सासेक्राइड है तो ऑब्वियसली इसमें से 5 वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव होंगे. सो बेस्ट ऑप्शन बनेगी चार्ली. 36 कार्बन एटम, C6 को हमने मल्टीप्लाई किया 12 से. हाइड्रोजन जो कि 72 होने चाहिए थे, लेकिन 5H2 निकलने का मतलब 10 हाइड्रोजन कम हो गए और 5 ऑक्सीजन कम हो गए. ऑक्सीजन मस्ट बी 31 है, सॉरी. यहाँ पे मैं ऑक्सीजन लिखनी चाहिए कि ऑक्सीजन का नंबर होगा 36 की बजाय 31. दैट इज द राइट ऑप्शन. ना कि 5H2 निकलने का मतलब 5 ऑक्सीजन रिमूव हो जाएंगे. 6 मोनोमर्स जब आपस में मिलते हैं तो ज्वाइन होंगे टोटल, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिमूव होंगे. सो राइट ऑप्शन इसमें बनेगा चार्ली विद ऑक्सीजन हैविंग 31 कार्बन एटम्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24. सेकंड मोस्ट अबंडेंट बायोपॉलीमर इज. तो बायोपॉलीमर जो मोस्ट अबंडेंट है दैट इज सेलुलोज, लेकिन सेकंड मोस्ट अबंडेंट पूछा गया. दैट्स व्हाई विल चूज काइटिन. ओवरऑल एनिमल किंगडम में ये मोस्ट अबंडेंट है, लेकिन एज अ कार्बोहाइड्रेट ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट बायोपॉलीमर भी है. अगर प्रोटीन के हवाले से पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड तो वो कोलेजन है. और सेलुलोज ओवरऑल मोस्ट अबंडेंट बायोस्फीयर में पाए जाने वाला polysaccharide carbohydrate. All amino acids which are found in human cells they are LIGO. तो अल्फा ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा. नंबर 26, theoretically how many dipeptides are possible from 10 different types of amino acid. इसके लिए हम एक फार्मूला डिराइव करते हैं x की पावर n, जिसमें x जो है वो टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड होता है गिवन, जबकि n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड चेंज शो करेगा. डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, किसी भी जो है वो लेंथ को आप फाइंड आउट कर सकते हैं उसके कॉम्बिनेशन को. सो 10 डिफरेंट टाइप्स, x की जगह 10 लिखेंगे और हमारे पास डाइपेप्टाइड है दैट मींस 2 अमाइनो एसिड. 10 की पावर 2, तो आंसर आएगा इसमें चार्ली. नंबर 27, द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन इज स्टेबलाइज्ड बाय 3 disulfide bonds. One of them is intrachain and two of them they are interchain.
disulfide bonds, as you can see in this picture. Number 28. Pick the odd one out with reference to globular and fibrous protein. Fibroin, keratin, and collagen, they are fibrous protein, but actin subunits, they are globular. That's why they're named as G-actin. G-actin. And number 29, collagen is not found in ligament, tendon, bone, skin, and connective tissue layers of the muscles. They all contain collagen, but nails and hair, they are abundantly having keratin rather than collagen. So Charlie, a protein which acts as a temporal energy buffer in muscles is phosphocreatine. बाकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन जरूर है लेकिन एनर्जी स्टोरेज बफर जो है टेम्पररी जो मिलता है मसल्स में दैट इज फास्फोक्रिएटिन. राइट ऑप्शन है इसमें डेल्टा. नंबर 31. Which of the following group of lipids provide insulation against heat loss in animals? Insulation is primarily provided by fats. Fats are categorized as acyl glycerols. So alpha is the right option. And lipids which provide protection against dehydration and they also protect against abrasive damage, which include waxes. जैसा कि plants में cuticle या animals की skin में भी जो waxes पाए जाते हैं. Which of the following are most abundant lipids? They are acyl glycerols, fats and oils. And number 34, all of the following are non-polymeric lipids except terpenoids. Carbs, proteins और nucleic acid, इनको हम polymers बोलते हैं, जबकि terpenoids भी polymers हैं और बाकी phospholipids में repeating units fatty acids बार बार नहीं मिल रहे होते as a monomer, so that's why बाकी lipids को हम polymers नहीं कहते. Number 35. How many carbon atoms are there in every molecule of prostaglandin? एक prostaglandin में normally 20 carbon atoms और 5 जो है वो rings मिलेंगे. So alpha. A group of lipids known as amphipathic or amphiphilic with two fatty acids in each molecule. They are phospholipids commonly found in cell membranes. That's why they are also named as membrane lipids, as you can see in this diagram. Number 37. Vitamin A is a diterpene. How many isoprene units are found in vitamin A? इसमें आंसर होगा 4 क्योंकि 2 isoprene units मिलेंगे तो एक monoterpene मिलेगा. And 4 isoprene units will combine together to form retinol or vitamin A, diterpene. Beta is the right option. Number 38. Most abundant type of phospholipid, that is lecithin or phosphatidylcholine alpha. Number 39. How many phosphodiester bonds can be found in one turn of DNA? हम जानते हैं कि एक टर्न में 20 न्यूक्लियोटाइड्स या 10 बेस पेयर्स होंगे. 10 न्यूक्लियोटाइड्स में 9 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होंगे. n-1 फार्मूला से आप इसको जान सकते हैं. तो 20 न्यूक्लियोटाइड्स में होने चाहिए 18. सो राइट ऑप्शन बनेंगे इसमें चार्ली. Number 40 and the last question of this portion, least stable type of RNA found in living cells is messenger RNA because it is degraded soon after it performs its translation function. Thank you so much. That was all about biological molecules and their important MCQs. I hope so कि ये सारी चीजें आपके लिए helpful रही होंगी. जज़ाकल्लाह.